हेलो पिलामाने वेलकम टू आवर चैनल पिलामाने आज आम तुम अष्टम श्रेणी इंग्राजी बही रो प्रथम यूनिट जहाँकि विट एंड विजडम रो प्रथम चैप्टर द विट दैट ओन हार्ट्स रो समस्त प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। तेबे चलो डेरी न करी वीडियो टी आरंभ करिबा और वीडियो टी आरंभ करिबारो कहबाकू चाहे जदि वीडियोटी भल लगी थाए ताहले वीडियो को निश्चय लाइक टे करिवो और चैनल को सब्सक्राइब मध्य करिकी रख जहाँ द्वारा आगो को आसीबाकू थिबा एई भली समस्त चैप्टर रो और समस्त पाठर प्रश्न उत्तर तुम माने सहजरे पाई परिबो। तेबे देखिबा चलो आजिर प्रथम प्रश्न। आजिर तुमर प्रथम प्रश्न होची डिस्कस इन पेयर। यह तुम बहिर प्रश्न गुड़िक प्रथम प्रश्न देख ए चारोटी प्रश्न देछि यह तुमको निजे डिस्कस कर लिखा पड़ो। देखा यार उत्तर गुड़िक एठारे तुम प्रथम प्रश्न पचारि व्हाई आर क्वालिटीज लाइक ह्यूमर्स एंड विट इम्पोर्टेंस इन ए पर्सन। तो यार आंसर तुम मैंने लिख दे हेल्प इन कनेक्टिंग विथ पीपुल डिफ्यूजिंग टेंस सिचुएशन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स क्रिएटिवली एंड स्प्रेडिंग जॉय है जेपर कि ह्यूमर्स और विट कहीं जरूरी कहीं दे हेल्प इन कलेक्टिव पीपुल लोक जोड़बार साहाय्य करता असुविधा बा भिन्न परिस्थिति साहाय्य करता विभिन्न असुविधा समाधान करिबारे साहाय्य करता और खुशी चारिआडे बांटी थाए। ए विटी पर्सन कैन मेक अदर्स फील कंफर्टेबल एंड एंटरटेन। तो से आमको ह्यूमर्स और विट एक क्वालिटी जड़े पर्सन मध्य थिबा जरूरी। देखिबा क्वेश्चन नंबर 2 को क्वेश्चन नंबर 2 पचारि व्हाई डू यू थिंक किंग्स एंड क्वीन प्रिफर टू हैव विटी पीपल एमंग देयर कंट्रीज है एमंग देयर कोर्ट्स। यार आंसर लिखिबो तुम माने विटी पीपल प्रोवाइडेड entertainment, offer clever advice to solve difficult problems and could speak truth to power in a humorous way that was easier to accept that they made the court lively and interesting है ना। यह थिला 2 नंबर प्रश्न उत्तर। देखिबा नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 रो उत्तर। क्वेश्चन नंबर 3 पचारि इफ यू वर आस्क्ड टू सॉल्व ए disagreement between two people what approach would you take है। तो यार आंसर लिखिबो तुम माने I would listen to both sides calmly and patiently without taking sides, then I would try to find common point and suggest a fair solution that respect both their feelings। okay देखिबा नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 have you ever been in a situation where a small misunderstanding led a big problem? How was it resolved? तो यार आंसर लिखिबो तो माने yes, I once misunderstood a friend's text message and thought they were angry at me. We stopped talking for a few days. It was resolved when we met in person and talked openly about it, clearing of the misunderstanding है। ये प्रश्न उत्तर तुम माने निज मनरू मध्य लिखिपार। देखिबा नेक्स्ट प्रश्न गुड़िक एबी देखिबा लेट अस डिस्कस। प्रथम क्वेश्चन नंबर 1 कहिछि करेक्ट द फॉलोइंग फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द टेक्स्ट। एई टेक्स्ट रु किछिटा एगुड़िक फॉल्स स्टेटमेंट गुड़िक दिया जाइछि याको हमकु करेक्ट वे रे लिखिबाकू पड़िबो। देखिबा यार उत्तर कोन हेबो हला टे देखिबा देखो रेक्टिफाई द फॉलोइंग फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द टेक्स्ट। प्रथम फॉल्स स्टेटमेंट देछि द क्वीन इंसल्टेड द किंग बाय स्पीकिंग अगेंस्ट द क्वालिटी ऑफ हिज पॉइंट। तो यह एक फॉल्स स्टेटमेंट अटे यह कहि नथिले। देखिबा करेक्ट स्टेटमेंट कोन द क्वीन डिड नॉट इंसल्ट द किंग्स पॉइंट। सी ऑन इंटेंशनली एंड several times while he was reacting it because she was exhausted, which the king mistook for disrespect
है यह तुम सठिक आंसर तुम क्वेश्चन नंबर 2 बा सेंटेंस नंबर 2 बा तेनाली रामा immediately went to the king and convinced him to talk to the queen है यह एक फॉल्स स्टेटमेंट अटे तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन देखा तेनाली रामा डिड नॉट गो टू द किंग इमिडिएटली है से ही क्षणी जाई नथिले ही लिसन टू द क्वीन told her he needed time to find the right strategy and later used a clever analogy in the court to make the king realize his mistake है या तुम सठिक उत्तर ये देखा स्टेटमेंट नंबर 3 the courtiers admired the king's poem and prized his literary talented है यह एक false statement अटे देखा करेक्ट स्टेटमेंट कौन है The courtiers did not admire the king's poem. When he tried reacting it to his minister, they all avoided him, making excuse. Okay. देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट तुम्हारा स्टेटमेंट नंबर 4 स्टेटमेंट नंबर 4 कही the minister in the court were eager to hear Tenali Rama's idea about paddy cultivation. तो यहाँ एक फॉल्स स्टेटमेंट अटे तो करेक्ट स्टेटमेंट ही द मिनिस्टर वेर नॉट एगर दे वेर स्केप्टिक एंड मेड फन ऑफ हिज आइडिया व्हिस्परिंग एंड स्निंगरिंग अबाउट मैजिक सीड्स है स्टेटमेंट नंबर 5 द किंग नेवर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड कंटिन्यू टू स्टे एंग्री विथ द क्वीन तो यहाँ एक फॉल्स स्टेटमेंट अटे तो देखा करेक्ट स्टेटमेंट कौन है The king did realize his mistake after Tenali Rama's clever analogy in court. That evening, he went to the queen, apologized, and they reconciled. यह थिला सठिक बा करेक्ट स्टेटमेंट एबे देखिबा नेक्स्ट प्रश्न गुडी नेक्स्ट प्रश्न देछि लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट तो तुमको एटारे गोटे पेसेज देछि हला read the extract and answer the following question that follow प्रथम आमे स्टेटमेंट पढ़िबा देखिबा the king thought I was disrespecting his point and storm off since then he has not spoken to me if I had known this would happen I would have chosen another day help me please Rama only you can help me king understand Rama nodded thoughtfully If you like, I will try my best to resolve this matter, Your Highness. But this need a well-planned approach, and I may need time to find the right strategy. तो यह गोटे तुम पेसेसटी तो देखा जहाँकि रानी बा क्वीन और तेनाली रामा मध्य जो कन्वर्सेसन टी होता देखा यार प्रश्न गुड़िक कौन देछि प्रश्न गुड़िक देख है प्रश्न देछि व्हाई डज द क्वीन बिलीव दैट ओनली तेनाली रामा कैन हेल्प द किंग अंडरस्टैंड है तो यार उत्तर गुड़िक आम देखा एबे देखिबा यार प्रश्न गुड़िकर उत्तर व्हाई डज द क्वीन बिलीव दैट ओनली तेनाली रामा कैन हेल्प द किंग अंडरस्टैंड तो यार आंसर लिखिब तो माने द क्वीन believes this because Tenali Rama is known throughout the court for his quick wit and clever solution to seemingly impossible problems. He has a special place in the king's court as a witty advisor. यह थिला यार आंसर एबे देखिबा नेक्स्ट प्रश्न पचारि देख व्हाट डज द क्वीन्स स्टेटमेंट है ये जो स्टेटमेंट द क्वीन if I had known this would happen I would have chosen another day suggest about her feelings एठारे को feelings सी व्याख्या करछंती तो यार आंसर हिजिबो कोन सी रिग्रेट्स द अनइंटेंडेड मिसअंडरस्टैंडिंग एठारे से रिग्रेट करुछंती बा फीलिंग्स रिग्रेट फील करुछंती नेक्स्ट प्रश्नटी क्वेश्चन नंबर 3
How does Tenali Rama's response reflect his wisdom and problem solving skill? तो यार आंसर लिखिबो तो माने his response show wisdom because he does not rush into action. He understands that a sensitive issue like a royal quarrel need a well-planned approach and right strategy, not a direct confrontation. This so he is thoughtful and strategic. ହେଲା ଏହା ଥିଲା यार आंसर। देखिबा नेक्स्ट प्रश्नर आंसरटी क्वेश्चन नंबर 4 if fill the blanks by choosing the correct option from those given in the bracket ହେଲା एठारे गुटे blanks देछि देखो the king's reaction so that he is sensitive and तो ऑप्शन देछि has a lot of faith and takes great pride in his poetry तो यारे sensitive and आंसर हिजबो takes great pride ହେଲା तो ए मध्यरु सठिक ऑप्शन टी होछि तमर takes great pride ହେଲା तमे सेही ब्लैंक्स रे takes great pride लिखिबो। देखिबा नेक्स्ट प्रश्न टी मध्य सेही बोली प्रथमे गोटे पैसेज देछि होला तो प्रथमे पैसेज टी देखिबा that evening the king approached the queen with a softened expression. Humble, he began, his voice gentle. I have been foolish. I see now that I overreacted. I let my pride blind me. I am so sorry. The queen, who had longed for this moment, smiled and replied, if you like, we can leave this quarrel behind us. I would be very much like to listen to your voice. यह थिला तुमर पेसेज टी देखिबा एबे तार प्रश्न गुडी को देखो प्रथम प्रश्न पचारिछि complete the following with a suitable explanation. When the king said I let my pride blind me, he means that हला तो यार अर्थ कोन आमे लिखिबा I let my pride blind me तो यार आंसर लिखिबो his excessive pride prevented him from seeing the situation clearly and rationally. It made him understand the queen's innocent yen as an insult. Okay, यह थिला यार आंसर। देखिबा नेक्स्ट प्रश्नर आंसर टी नेक्स्ट प्रश्न पचारिछि देखो why does the queen say if you like we can leave this quarrel behind us तो से एही बोली काहे की कहली हला यार आंसर लिखिबो तो माने the queen say this because she is forgiving and eager to restore peace and happiness in their relationship. She has longed for this moment and recognition and does not want to hold a grudge. हला एथिला तुमरो 2 नंबर प्रश्नर उत्तर एबे देखिबा नेक्स्ट प्रश्न ट्रिपल आई fill the blanks by choosing the correct option from those given in the brackets हला एठारे मध्य सेही बोली गोटे blanks देछि the king acknowledged that his pride could his judgment which show कोन हेबो intelligence and courage maturity and self awareness तो यार सठिक उत्तर टे हिजबो कोन maturity and self awareness हला देखिबा नेक्स्ट प्रश्नटी क्वेश्चन नंबर 4 state any one characteristics that the queen's response to king's apology show about her तो यार आंसर लिखिबो तो माने it show that the queen is forgiving gracious and peace loving she values her relationship with the king more than holding on to anger हला तो यह थिला यार सठिक आंसर एबे देखिबा नेक्स्ट प्रश्न गुडी कर उत्तर हला जाकी तमरा सेक्शन 2 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हला एटारे किछि क्वेश्चन गुडा को दिया जाईछि जार आंसर हमकु लिखिबा को पड़िबो तो देखिबा प्रथम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 व्हाई वाज द विजयनगर एम्पायर कंसीडर्ड टू बी इन इट्स गोल्डन एरा ड्यूरिंग कृष्णदेवराय रीजन तो यार आंसर लिखिबो तो माने it was considered the golden era because art literature and architecture flourished हला बहुत उन्नति करथिला से समय रे the king himself was a gifted poet and a great
patron of learning. His court was home to 8 celebrated poets, the अष्टदिग्गज है यार आंसर लिखा। अभी देखा क्वेश्चन नंबर 2 है। हाउ डिड तेनाली रामकृष्णन गेन ए स्पेशल प्लेस इन द किंग्स कोर्ट है। तो यार आंसर लिखा तुम मैंने तेनाली रामकृष्ण गेन्ड ए स्पेशल प्लेस ड्यू टू हिज क्विक विट एंड ह्यूमर है जहाँ मोर पाठटी अटे क्विक विट एंड ह्यूमर। ही वाज known for his clever solution to seemingly unsurmountable problems, which made him a beloved figure and a witty advisor. Next प्रश्नटी क्वेश्चन नंबर 3। एबे देखिबा तमरो क्वेश्चन नंबर 3। How did the quarrel between the king and the queen affected the place? affected the palace? तो यार आंसर लिखिबा तुम माने the quarrel cast a shadow over the palace. The once cheerful corridors became quiet and forlorn. The king's absence from the queen created a tense and unhappy atmosphere throughout the palace. हला या थिला क्वेश्चन नंबर 3 रो आंसर। एबे देखिबा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पचारि छी देखो what strategy did Tenali Rama use to make the king realize his mistake? तो यार आंसर लिखिबा तुम माने Tenali Rama used clever analogy in the court. He introduced special spreadsheets and talk about the importance of the person showing them. Hala? He linked a farmer yelling while showing to the queen yelling, implying it was a natural act, not a sign of disrespect. This made the king realize he had overreacted. हाला यह थिला तुमरो क्वेश्चन नंबर 4 रो आंसर टी। एबे देखिबा क्वेश्चन नंबर 5 रो आंसर। एबे देखिबा तुमरो क्वेश्चन नंबर 5 रो आंसर टी। What was the reaction of the courtiers when Tenali Rama introduced his special paddy seeds? तो यार आंसर लिखिबो तुम माने the courtiers react with screamers and mockery. They whispered and snickered, making fun of the idea, calling them magic seeds and wondering if they would grow without water. हला या थिला क्वेश्चन नंबर 5 रो आंसर। एबे देखिबा नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पचारि छी how does the story conclude and what lesson can be learned from it? तो यार आंसर लिखिबो तुम माने the story conclude with the king realizing his mistake, apologizing to the queen and the recalling Tenali Rama is rewarded for his wisdom. The lesson is that pride can blind us and lead to misunderstanding, and that wit and wisdom can be used to solve problems peacefully and restore harmony. It also teaches the importance of forgiveness. Okay, यह थिला तमरा 6 नंबर क्वेश्चन रो आंसर। देखिबा एबे देछि नेक्स्ट प्रश्न देछि तम मानको फिल द लेट अस लर्न हला। तो क्वेश्चन नंबर 1 पचारिछि फिल इन द ब्लैंक्स एंड complete the paragraph by choosing suitable expression from the box given below. एठारे गोटे बॉक्स देछि देखो एठारे किछु गुडाक वर्ड देछि जाको हमकु नै सही ब्लैंक्स गुडी करे सठिक स्थान रे सुइटेबल एक्सप्रेशन गुडी को आमे सठिक ब्लैंक रे भरिबा को पड़िबो। देखिबा प्रथम देखिबा हमें पढ़िबा प्रथमे कोन कहिछि My mother is quite witty and her sense of humor always lightens stressful moments. Once at a family dinner, an argument began over a minor issue and I murmur swept through. हैला एई डेज रे लगी पतो माने murmur swept through जा होची तमरो एई एक्सप्रेशन रे देछि हैला। तापर लिखिबो everyone feels uncomfortable just as things were getting serious. She made a clever remark and laughter. हैला तेबे
दुई नंबर ब्लैंक्स रे लिखिबो रिपेल्ड थ्रू हला द गैदरिंग मेकिंग एवरीवन रिलैक्स्ड एंड द पर्सन हु स्टार्टेड द आर्गुमेंट स्ट्रोम ऑफ हला ब्लैंक्स नंबर 3 रे लिखिबो स्ट्रोम ऑफ एवरीवन डिसप्रूव ऑफ द एक्शन एंड हस फेल ओवर द रूम हला माय माइंड रेस्ट बैक टू हाउ माय मदर हला यह लिखिबा ब्लैंक नंबर 5 रे टू हाउ माय मदर हैड शेप्ड अदर situation like this without her such moments would have to cast a shadow over the gathering. I hope that I grow up to be as witty as my mother हल यह थिला तमरो क्वेश्चन नंबर 1 रो आंसर गुडी को देखबा एबे क्वेश्चन नंबर 2 बा क्वेश्चन नंबर डबल आई the writer uses words like roar murmur in the text to indicate the sound produced. Fill the blanks with suitable sound words from the box given below. एठारे गोटे बॉक्स देछि देखो बॉक्स रे किछिटी वर्ड देछि हला जो वर्ड जोठारे बसिबो बा सठिक स्थान रे हम नै कि बसेइबा हला देखिबा प्रथम वर्ड टी बा प्रथम सेंटेंस टी देखिबा As the teacher began the riddle challenge, a murmur of excitement spreading through the classroom. हला यही ब्लैंक्स रे तुमे लिखिबो murmur. Question number 2 बा sentence number 2 देखिबा Sukanya dash in relieved the sigh in relieved she loved riddles more than solving mathematics problems. हला sentence number 3 देछि देखो think carefully the teacher began to mumble हला यही ब्लैंक्स रे लिखिबो तुम माने mumble as she wrote a riddle on the board हला सेही पली देखिबा सेंटेंस नंबर 4 टी कोन देछि सेंटेंस नंबर 4 देछि देखो when the question was revealed a few student कोन एठारे हिजबा ए ब्लैंक्स रे हिजबा groaned हला बा चिल्ले उठिबा realizing it was an easy as they had expected देखिबा सेंटेंस नंबर 5 some exchange sneakers हला एही ब्लैंक्स रे लिखिबो तुम माने sneakers wondering if anyone at all would be able to solve it हला सेही बोली 6 नंबर रे लिखिबो तुम माने सेंटेंस नंबर 6 just then Sukanya tapped her book on the desk with a small thought deep in the thought हला देखिबा नेक्स्ट सेंटेंस टी Sentence number 7. Ah, I see it now. She said, stretching with a sigh, as if it had taken her great effort. हला तो यही ब्लैंक्स रे लिखिबो तुम माने sigh. सेही बोली देखिबा सेंटेंस नंबर 8. A small breeze made the window rattle. हला adding to the suspense of the moment. हला सेही बोली देखिबा नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 9. So what is the answer the student crossed their voice filling with the playful enthusiasm सेही बोली सेंटेंस नंबर 10 देखिबा leaning forward with a smile Sukanya whispered sometimes the trickiest question have a simplest answer हला या थिला तमरो सेंटेंस नंबर 10 रो आंसर एबे देखिबा हमें एबे देखिबा हमें तमरो क्वेश्चन नंबर ट्रिपल आई हला क्वेश्चन नंबर ट्रिपल आई you have already learned that compound words is formed when two or more words are combined to make a new word with a distinct meaning here are some words given in column 1 and 2 हला column 1 और 2 रे हमको किछटी सेंटेंस देछि आमे ताको जोड़िबा ओ कॉम्प्लेक्स वर्ड तयारी करिबा देखिबा कोन कोन देछि तो प्रथम हला देखिबा एबे कॉलम 1 और कॉलम 2 को आमे जोड़िबा ओ कॉम्प्लेक्स वर्ड तयारी करिबा सेही बोली क्विक होइबा क्विक विटेड हला तो यह हबो तुमरो आई नंबर रो सहित तुमे जोड़िबो ओ लिखिबो क्विक विटेड
से सॉफ्ट हो तुमर स्पोकेन है। तो यह तुमर 2 नंबर सहित बा सॉफ्ट स्पोकेन जोड़ी हेबे। सही बोली कॉमन कौन हो कॉमन सेंस तो मैंने जानिछ कॉमन सेंस यह ट्रिपल आई सहित जोड़ी हेब। से बोली हाउस हाउस कौन हो हाउस हो होल्ड है हाउस होल्ड तो मैंने जानी हाउस होल्ड एक कॉम्प्लेक्स वर्ड। से बोली बुक बुक हो कौन बुक स्टोर सहित जोड़ी हेब से बोली बुक स्टोर। से बोली इल हो इल जोड़ी हेब टेम्पर सहित है इल टेम्पर। से बोली स्काए स्काए जोड़ी हेब कौन स्काए ब्लू स्काए तुम शुणी से बोली एठारे हो स्काए ब्लू है भी डबल आई सहित जोड़ी हेब। से बोली डांस डांस हॉल जानी तुम मैंने है से बोली एठारे डांस हॉल सहित जोड़ी होगी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तैयारी करिवो है। यह थिला तुमर मैचिंग वर्ड्स है। एबे देखिबा नेक्स्ट प्रश्नटी से ही मैचिंग वर्ड गुड़ी को लेकिन आम देखा फिल द ब्लैंक्स एटा देछि प्रश्न पचारि देख फिल द ब्लैंक्स विथ ए वर्ड क्रिएटेड इन द प्रीवियस क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन गुड़िक बा जो वर्ड गुड़िक आम क्रिएट कले प्रीवियस क्वेश्चन रे से क्वेश्चन गुड़िक से ही वर्ड गुड़िक आनी आम एटारे जोड़िबा। देखिबा कोठी को वर्ड लगे देख एठारे मु लिखि देछि रवि वाज सॉफ्ट स्पोकन है सॉफ्ट स्पोकन ऑलवेज स्पीकिंग कामली इवन इन आर्गुमेंट्स ही ग्रीव अप इन ए लाइवली। तो एटारे देख ब्लैंक्स देछि ब्लैंक्स नंबर 2 तो ब्लैंक्स नंबर 2 रे लिखिबो तुमे हाउस होल्ड है वेयर ही लर्न टू हैंडल डिफरेंट पर्सनालिटी हिज फ्रेंड्स अरुण हाउएवर वाच कौन हाउएवर तुम देछि देख तुमको ब्लैंक्स नंबर 3 ब्लैंक्स नंबर 3 लिखिबो इल टेम्पर है एंड ऑफन लॉस्ट हिज पेशेंस डिस्पाइट दिस अरुण एडमायर रवि है से बोली ब्लैंक्स नंबर 4 देछि देख ब्लैंक्स नंबर 4 रे लिखिबो क्विक विटेड थिंकिंग वन इवनिंग एज दे पास्ट ए से बोली देखि देख एठारे ब्लैंक्स नंबर 5 देछि ब्लैंक्स नंबर 5 रे लिखिबो तुमे कोन डांस हॉल दे सॉ सम परफॉर्मर्स रशिंग आउट रवि नोटिस दैट वन ऑफ देम ड्रॉप्ड ए कौन ड्रॉप्ड एठारे बुक है ड्रॉप्ड ए बुक एंड ड्रॉप्ड ए एठारे क्वेश्चन ब्लैंक्स नंबर 6 देछि देख स्काई ब्लू बुक्स है एठारे लिखिबो स्काई ब्लू बुक्स ऑन द ग्राउंड इज दिस योर see he asked oh thank you young man the performer smiled it is a recent purchase from the bookstore है bookstore round the corner true to his nature Arun promptly said to Ravi it is common sense that it is not from a bakery but bookshop Ravi smiled and they walked on है या थिला तुमर ब्लैंक्स गुड़िकर सठिक आंसर गुड़िक बा क्वेश्चन नंबर 2 रो सठिक आंसर गुड़िक। एबे देखिबा हमें क्वेश्चन नंबर आईवी दिया जाइतिबा प्रश्न गुड़िकर बा जो कॉलम्स 1 और 2 रे नाउ मैच द सबऑर्डिनेट क्लॉज और जहाँकि इफ क्लॉज अटे जहाँकि हमको मेन क्लॉज सहित जहाँ कॉलम 2 रे मेन क्लॉज गुड़िक देछि ता सहित हमको जोड़िबा को पड़िबो। तो देखिबा एबे हमें कॉलम 1 और कॉलम 2 रे देथिबा सबऑर्डिनेट क्लॉज को कॉलम 2 रे देथिबा मेन क्लॉज सहित जोड़िबा। देखिबा प्रथमे को सबऑर्डिनेट क्लॉज टी प्रथम सबऑर्डिनेट क्लॉज टी देछि देखो इफ आई हैड ए मैजिक वांड हला तो यह कॉलम 2 रे तुमे जोड़िबो सी नंबर सहित हला आई वुड गिव माय सेल्फ विंग्स हला सही बोली डबल आई सबऑर्डिनेट क्लॉज टी देछि इफ इट रेन्स टुमोरो है जदि काली वर्षा हुए ताहले कौन हम यह जोड़ी हे तुम कॉलम 2 रो ई नंबर सहित वी स्टे इंडोर एंड प्ले बोर्ड गेम्स से बोली नंबर 3 देछि इफ यू हैड लिसन केयरफुली है यू हैव लिसन केयरफुली तो यह हो ट्रिपल आई
एफ नंबर सहित जोड़ी हेबो हला यू वुड हैव सॉल्व द पजल सही बोली सबऑर्डिनेट क्लॉज 4 नंबर सबऑर्डिनेट क्लॉज दीची देखो इफ यू फिनिश्ड योर होमवर्क वी विल गो टू द थिएटर है यह हे तुम आईवी नंबर ए सहित जोड़ी हेब कलम 2 रही बोली क्वेश्चन नंबर भी देछि देखो इफ आई वर इनविजिबल आई वुड स्नीक इनटू द सीक्रेट रूम है कलम 2 ऑप्शन नंबर बी सहित जोड़ी हेब सही बोली शेष बा VI नंबर देखा इफ द अलार्म हेड रंग तो से जोड़ी हेब डी सहित है VI द बॉय वुड हैव वोकन अप ऑन द टाइम है यह थिला तुमर सठिक उत्तर गुड़िक एबे देखिबा नेक्स्ट प्रश्नटी पचारि देख भी कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस appropriately with either the main clause or the subordinate clause if clause है जोठारे हमको सबऑर्डिनेट क्लॉज लगेबार अछि लगेबा कोठारे मेन क्लॉज लगेबाको पड़िबो तो कोठारे सबऑर्डिनेट क्लॉज लगेबाको पड़िबो देखिबा तो प्रथम प्रश्न पचारि देख योर टीचर विल बी अनहैप्पी इफ यू डू नॉट सबमिट योर होमवर्क ऑन टाइम है जदि तुम्हें तुम होमवर्क ठीक समय रे सबमिट करिबो नाही ताहले तुमर टीचर अनहैप्पी होई जिवे हला से बोली देखिबा क्वेश्चन नंबर 2 दे वुड हैव कॉट द ट्रेन इफ दे हैड लेफ्ट होम अर्लियर हला से बोली 3 नंबर पचारि देखो क्वेश्चन नंबर 3 डैश इफ यू कंटिन्यू टू स्टे ऑफ लेट एवरी नाइट तो यार सठिक उत्तर हो यू विल फॉल इल है इफ यू कंटिन्यू टू स्टे ऑफ लेट एवरी नाइट है सही बोली क्वेश्चन नंबर 4 पचारि इफ सी न्यू द आंसर सी वुड राइज हर हैंड है सी जदि आंसर टी जानी थांते से हाथ टेकिबो है से बोली क्वेश्चन नंबर 5 पचारि सी वुड हैव पास द एग्जाम इफ सी हैड स्टडी हार्ड है सी जदि कठिन परिश्रम करथिबो से निश्चय पास हेबो से बोली क्वेश्चन नंबर 6 पचारि देख इफ आई हैड मिलियन रुपीज आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड है यह हेबो क्वेश्चन नंबर 6 रो आंसर एबे देखिबा नेक्स्ट प्रश्नटी बा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर VI पचारि देख कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस वन एग्जांपल हैज बीन डन फॉर यू है गोटे एग्जांपल दे दीची इफ आई वर ए ट्री आई वुड प्ले विथ द वाइंड एंड टॉक टू द बर्ड्स है से बोली आमको सेंटेंस नंबर 2 देची देख इफ आई वर द हेड टीचर ऑफ माय स्कूल है जदि तुम्हें तुम स्कूल हेड टीचर होता ताहले कौन हे आई वुड मेक रूल्स है आई वुड मेक रूल्स मोर फंड एंड ऑर्गेनाइज मोर स्पोर्ट्स डे है से बोली देखिबा सेंटेंस नंबर 3 इफ आई वर ए बर्ड है मुझे पक्षी जाती आई वुड फ्लाई हाई इन द स्काई एंड सी द वर्ल्ड फ्रॉम एबव है से सेंटेंस नंबर 4 देखिबा इफ आई वर ए मैजिशियन आई वुड यूज माय मैजिक टू हेल्प पीपल इन नीड से बोली सेंटेंस नंबर 5 देछि देखो इफ आई हैड स्टडी हार्डर आई वुड हैव स्कोर बेटर मार्क्स ऑन द टेस्ट है यह थिला तुमर आंसर गुड़िक एबे देखिबा नेक्स्ट सेक्शन टी लेसन लेट अस स्पीक है तो एटारे देखिछि देखो टेक अस टर्न है एटारे यस नो क्वेश्चन WS क्वेश्चन है से बोली एटारे देखो टेक टर्न्स टू प्रैक्टिस बाय सेइंग देम अलाउड इन द करेक्ट इनोटेशन है सेपरी कौ टोन रे कही आमको देखा पड़ो इज दिस कैट योर कैट तो यह जाऊँगी राइजिंग टोन है तुम लिख राइजिंग टोन से बोली नेक्स्ट प्रश्न पचारि देख व्हाट इज द नेम ऑफ योर कैट है यह हूँ फॉलिंग टोन है से बोली क्वेश्चन नंबर 3 विल यू बी गोइंग टू योर विलेज है तुम्हें तुम ग्राम को जाऊँ कि तो यह हो राइजिंग टोन रे से बोली देखा नेक्स्ट प्रश्न गुड़िक बा नेक्स्ट क्वेश्चन गुड़िक व्हाई आर यू गोइंग टू योर विलेज यह हो जाऊँगी फॉलिंग टोन है से बोली भी हो इज दिस वेयर यू लिव तो यह जाऊँगी राइजिंग टोन रे
से बोली VI where do you live यह जाउची फॉलिंग टोन। से बोली कैन आई मीट योर पेरेंट्स तो यह जीव राइजिंग टोन। से बोली V ट्रिपल आई हो फॉलिंग टोन। से बोली IX डू यू हैव एनी प्लान्स फॉर टुमोरो यह जीव राइजिंग टोन। से बोली नंबर X हो व्हाट आर यू गोइंग टू डू टुमोरो यह जीव फॉलिंग टोन रे। एबे देखिबा हमें नेक्स्ट प्रश्न गुड़िक है एठारे हमको प्रश्न हु यूज करिकी एठारे देइथिबा हु व्हाई व्हाट व्हेन हाउ वेयर ये सब नहीं कि हमको प्रश्न तैयारी करने को पड़िबो और तार आंसर मध्य लिखिबा को पड़िबो। देखिबा एठारे प्रथम प्रश्न देइछि देख द नेम ऑफ द विटी कैरेक्टर हु लगे कि हमको एठारे तमे क्वेश्चन टी लिखिबो हु इज योर फेवराइट विटी कैरेक्टर फ्रॉम ए फोक टेल और आंसर मध्य लिखिबो माय फेवराइट विटी कैरेक्टर्स इज तेनाली रामा हला। बे देखिबा नेक्स्ट प्रश्न टी क्वेश्चन नंबर 2 द रीजन फॉर हर हिज विट बिगिंस इम्पोर्टेंट इन द स्टोरी या हमको व्हाई लगे कि क्वेश्चन तैयारी करबा को पड़िबो। तो क्वेश्चन टी लिखिबो तो माने व्हाई वाज तेनाली रामास विट इम्पोर्टेंट इन द स्टोरी हला। यार आंसर लिखिबो तो माने इट वाज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट हेल्प सॉल्व ए बिग प्रॉब्लम बिटवीन द किंग एंड क्वीन हला। एबे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 द मोस्ट फेमस ट्रिक और क्लेवर आइडिया ही यूज्ड व्हाट हला। या हमको व्हाट लगे कि आंसर बा क्वेश्चन तैयारी करबा को पड़िबो। देखिबा क्वेश्चन टी तैयारी करले कोन हेबो व्हाट क्लेवर आइडिया डिड तेनाली रामा यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो यार आंसर लिखिबो तो माने ही यूज टू क्लेवर एनालॉजी ऑफ पेडी सीड्स टू मेक द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक। देखिबा क्वेश्चन नंबर 4 कहिछि देखो द टाइम पीरियड और सेटिंग ऑफ हिज फोक टेल ब स्टोरी व्हेन लगे कि हमको क्वेश्चन तैयारी करबा को पड़िबो। से बोली तुमे क्वेश्चन तैयारी करिवो व्हेन डज द स्टोरी ऑफ तेनाली रामा टेक प्लेस हला। और यार आंसर लिखिबो इट टेक प्लेस ड्यूरिंग द रीजन ऑफ किंग कृष्णदेवराय ऑफ द विजयनगर एम्पायर। से बोली देखिबा एबे हमें क्वेश्चन नंबर 5 पचारि देखो द वे सी बा ही यूज्ड हिज बाहर इंटेलिजेंस टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। तो एठारे हमको यूज करिबार अछि हाउ रो यूज करिबा। से बोली क्वेश्चन देखिबा हाउ डिड तेनाली रामा यूज हिज इंटेलिजेंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो यार आंसर लिखिबो तो माने ही यूज्ड हिज इंटेलिजेंस बाय क्रिएटिंग ए सिचुएशन इन हर कोर्ट दैट मिरर्ड द किंग ओन मिस्टेक हला। या थिला क्वेश्चन नंबर 5 रो आंसर। एबे देखिबा क्वेश्चन नंबर 6 जहाँकि तुम शेष प्रश्न अटे। तो शेष प्रश्न करने आगर प्रथमे कही रखा चाहे जदि भिडियोटी भल लगी था भिडियोटी को निश्चय गोटे लाइक कर और सब्सक्राइब कर चैनल को जहाद्वारा आग को आसपाक एमती समस्त भिडियोर आंसर गुड़िक तुम्हें जापर। देखा शेष प्रश्नर उत्तर द लोकेशन व्हेयर द स्टोरी टेक प्लेस। तो व्हेयर है कौठारे ए स्टोरी घटी। तो क्वेश्चन लिख तुम्हें व्हेयर डज द स्टोरी टेक प्लेस आंसर लिख द स्टोरी टेक्स प्लेस इन द रॉयल कोर्ट ऑफ विजयनगर है। यह तुम शेष प्रश्नर